वैल्यू एफी के लिए। अब्दुलरहमान, एफी का ऑक्सीडेशन हमको इलेक्ट्रिसिटी देगा या नहीं देगा? So it's 0.44 MV. प्लस या माइनस? So plus. दिख रहा है ना बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर, इसमें है थोड़ा। नहीं सर, यही प्रॉब्लम हो गया था सर, माइनस लिया था मैंने। हाँ, लेकिन आपको पता है ना क्यों मतलब माइनस नहीं होगा, वो हम देखे थे। लेकिन देखिए, जनरली हम बताते नहीं है बच्चों को कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। हम बोलते हैं कि उस वहां पे देखिए, वहां पे कुछ गलती है आपको, फिर से सोचिए। उसमें आपको क्या करना रहता है ना, व्हेन आई से ना रीथिंक अबाउट इट, देन लुक एट सब क्वेश्चंस जो आपने पहले किया है, उसमें आपने किस तरह से। अब देखिए, अगर आप लोग ने ये नहीं लिखा होगा, इस वजह से हमने ये भी कहा कि आपको कि आप थोड़ा ठीक से और लिखिए, है ना। स्टेप वाइज कीजिए चीजों को, तब आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अभी तो जैसे हमने बता दिया, अभी जैसे आपको पता चल गया, हमने पूछ लिया तो। लेकिन ये चीज इस फॉर्मेट में आप लिख के रखिएगा ना इन चीजों को, तब आप लोग को ज्यादा आसानी होगी। फिर आप खुद से ही यहाँ पे बता सकते हैं ई नॉट रिडक्शन जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी 0 वोल्ट्स, बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इट इज गोइंग टू बी 0 वोल्ट्स। तो ई नॉट से आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.44 वोल्ट्स। आई थिंक उसके बाद का आपको उतना दिक्कत नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन ओनली से वहां से। तो फिर उसके बाद एक और चीज देखिए, आपने नर्स्ट इक्वेशन भी मतलब ये इक्वेशन लिखा है? चलिए ठीक है, हाँ आपने लिखा है इक्वेशन। एनोड और कैथोड का इक्वेशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग ना, इट व्हाट विल हैपन इज दैट एरर्स विल क्रीप इन। ठीक है, आपकी गलतियां कुछ जो है इधर उधर से होने लगेंगी, उसका ध्यान रखिए बस। आप लोग स्टेप वाइज करने के लिए कहते हैं हमेशा। ओके समायरा, टेल मी, आपने सवाल सब किया था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये समायरा, Sir, I didn't complete it, so I forgot about it. कंप्लीट का क्या मतलब, आपने स्टार्ट किया खत्म नहीं किया, या आपने स्टार्ट ही नहीं किया? नहीं स्टार्ट किया सर, लेकिन हर तो जगह ना हाफ करके रखा। कहाँ तक किया आपने? ये समायरा, Sir, I did, but only half, like each question. आधा। पूरा कंप्लीट नहीं किया आपने कोई भी सवाल को? क्यों, ऐसा क्यों? एक सवाल पकड़िए, उसको कंप्लीट। लॉग पार्ट में थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन। ठीक है, आप भेजिए, एक सवाल भेजिए, हम बताते हैं आपको। आपको भेजना चाहिए ना, फिर आपसे अगर सवाल नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप कीजिए। तन्वी, कोई एक सवाल भेजिए जो आपने किया हो, जिसमें लॉग में दिक्कत आ रही है। अच्छा फहद, अभी तक तो हमने आपका नहीं चेक कर पाए, आप भेज दिए थे हमको, लेकिन हम चेक नहीं कर पाए हैं। आपको किसी में दिक्कत है क्या, बताइए तो जरा। यस फहद, नहीं सर। सारे हो गए सवाल? जी सर। अच्छा ठीक है, फिर हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, सर वो थर्ड वाले में थोड़ी दिक्कत आई। थर्ड वाले में? फर्स्ट के जी थर्ड में सर, या फिर वो लास्ट? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने में। इसमें? जी सर वही। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए सबके लिए ये। Sorry, not lost equation. When you have the complete cell reaction, then you can calculate the number of electrons by using delta oxidation state
into stoichiometry। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किसी एक के लिए भी फॉर एनी आयन stoichiometry ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक को भी आप पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्रोमियम फॉर एग्जाम्पल हियर, सो यू कैन सी दैट द क्रोमियम, व्हाट इज द डेल्टा ओएस, टेल मी। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? 3+। हाँ 3 आ रहा है, राइट। एंड व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री ऑफ Cr? 2। ठीक है, आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन आएगा आपके आंसर में भी, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन आया था कि नहीं आया था? जी सर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। 6 इलेक्ट्रॉन आया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप Fe को भी लीजिएगा तब भी आपके पास सेम ही आएगा। यहाँ पे Fe में क्या है डेल्टा ओएस? What is the delta OS guys for Fe? Change in oxidation state. Tell me. 0। नहीं, Fe के लिए देखिए ना, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? What is the oxidation state here in this box? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? What happened guys? +2 है ना? What happened? किसी का जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो सर्कल किया हमने Fe वहाँ पे 0 है, राइट? हाँ या ना कुछ तो बोल दीजिए प्लीज। ऐसा लग रहा है आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आ रहा। All of you got this? Yes or no? Please tell me Fe का। Oh, I Yes, can't hear sir. anything. Yeah, okay. Just a second. यहाँ पे डेल्टा वाइज कितना हो जाएगा? ये इट इज 2, here it is 0, that will be equal to, sorry, that will be equal to 2 into 3, that is again equal to 6 electron। ठीक है, got this guys? Yes or no? Please tell me. Yes, I got it. Okay. Okay, so anyone else tried any like, did you have any problem in these questions? Please let me know now. I will discuss that question. How many of you tried this? Raise your hand. How many of you tried this? नो वन। अरे भाई फहद आपने तो किया है, आप तो हाथ रेस किए। अब्दुल रहमान आपने तो किया है। रेज योर हैंड इफ यू हैव ट्राइड दिस। So what are the homework? हाँ होमवर्क जी। अच्छा Okay. मैमुना आपने भी किया? ओके मैमुना, एनी प्रॉब्लम in these questions? Did you face any problem मैमुना? No, all were done correctly? Okay. चलिए एक सवाल कीजिए फिर आप लोग। किंजा नहीं आई है ना आज? किंजा इज हियर? नो शी इज नॉट हियर। ट्राई दिस वन, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे।
You can lower your hand, guys. And send E naught if you have calculated the E naught.
Yes, Samara, correct for E naught. Yes. Yes, that will correct for E naught. हाँ, एक बात होता है, you must be knowing, hearing this not very much. आप लोगों को क्या लगता है? What is this? When I say not, yeah, what is this not? Who can answer me? Also, in like since I have been taught with by many teachers who are from Kerala, and in Kerala you don't. I think people in Kerala, they don't say 102, they say 102. Am I right about this? Yes, sir. Right. So what is this not? 0. जीरो नहीं है, लेकिन नॉट हम जो मिनिमम, ओके, नॉट नॉट जो हम बोलते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होगी, हम वो पूछ रहे हैं. व्हाट इज द वर्ड? अरे क्या घा दैट नॉट मीन्स इट इज टू टाई समथिंग ना, उसको तो के एन ओ टू ही बोल रहे हैं बच्चे. Okay, so you may not know. Let me tell you. Sir said it in class. I don't remember. Sorry? It was something like not the not spelling. It was like night or like a. हाँ, It it was is like night. NAUGST. Yeah, Naughty wala yeah. not. This is NAUGST. This means nothing. Okay. This means nothing. So the same E naught is here. Okay. When we say not. ठीक है. Send the answers, guys. I think काफी लोगों का हो गया होगा. Just a second. Send the answers, guys. Send the answers. What happened, guys? बहुत लोगों ने आंसर नहीं भेजा अभी तक. सर लॉग निकाल रहा हूँ. लॉग निकाल रहे हैं. लॉग में इतना डिफिकल्टी क्यों हो रहा है भाई? It is a simple log. How many of you are still in log? Raise your hand. लॉग वाले हाथ रेज कीजिए प्लीज.
Okay, so many are not okay. सहल, सिर्फ सहल. बाकी समायरा, मैमूना, अब्दुल रहमान. Samara has sent. What about others? Maimuna, Huzaifa. I think that's fine. Samara. E नॉट सेल विल बी. अच्छा, E नॉट सेल भी बहुत सारे लोगों ने भेजा. E नॉट सेल तो भेजिए, क्या हो गया? मैमूना, सेंड मी योर आंसर. Maimuna, send me your answer. Huzaifa, send me your answer. Abdul Rahman, send me your answer for E naught at least. Yes, I'm sending. Yes. सर मैंने भेजा है। जी, आपने भेजा, ठीक है. हाँ, अब्दुल रहमान, आपका ये ठीक है. E नॉट सेल सही आ रहा है आपका. सहल. तो मैंने E नॉट बाकी का भी सेल. भेजा था. बाकी का भी भेजा आपने. अच्छा, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं. हाँ, अब आगे. सहल, आपने लॉग तक भेजा. लॉग में आप फंस गया लगता है. ओके, देखते हैं. नहीं ओ सर, मैंने नो लॉग नो को नो नो पहले नो. अरे, एक सेकंड, एक सेकंड. अब्दुल रहमान, लॉग सही नहीं है आपका. हाय हाय सर एक बार हाय. मैंने चेक करा, मैंने आंसर ऊपर लिखा है लॉग के ऊपर, मैंने लॉग अलग से सब करा है। अच्छा, ई सेल का आंसर. अरे नहीं 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 नहीं, दैट्स रॉन्ग. बहुत ही गलत है. आप लोग हैं बेवकूफ. आधा आधा पार्ट करके इधर उधर भूल जा रहे हैं सिर्फ चीजों को. देखिए इधर. ऐसी गलती कीजिएगा तो कैसे चलेगा? मामूना, आपका आंसर नहीं आया अभी तक. सो व्हाट डू वी हैव इन द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा? ई नॉट सेल पहले लिख देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू प्लस 0.76 बिकॉज हाइड्रोजन का तो 0 है और दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो आई विल जस्ट फहद. हाँ ठीक है सर, फहद आपका शायद सही है. हमको कुछ उसमें अपैरेंट मिस्टेक नहीं दिखा, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके. ठीक है. सेल रिएक्शन इज गोइंग टू बी जिंक टू जिंक 2 प्लस. तो यहाँ पे जिंक होगा हमारे पास प्लस. हियर वी हैव H प्लस. H प्लस होगा यहाँ पे. इट इज गोइंग टू गिव मी Zn2 प्लस. प्लस इट इज गोइंग टू गिव मी हाफ H2. तो यहाँ पे इसका आई थिंक 2 मल्टीप्लाई कर देने से चार्जेस आर सेम. Okay. अब now we are having Zn2 plus pressure of H2. Then what is H plus का स्क्वायर. सही है, बात सही है. देखिए बात सही है. क्या हो गया? जी सर सही है. सही है सर. लॉग वैल्यू इज माइनस. देखते हैं. Let us see Andrew. So this will be equal to E naught cell is 0.76 minus, हम इसको 0.03 कर देते हैं. 0.059 by 2 ही रहने देते हैं, शायद कट जाए कुछ. सर ये आप pH2 क्या लिखे सर? pH2 क्या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे? ये पहली बार लिख रहे हैं. यहाँ लिखा था ना हमने. हाँ उसके बाद अगर आप सवाल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है हाइड्रोजन प्रेशर ऑफ H2. वाह, पिज्जा अभी आ रही है. हाँ, लेटाएंगे बच्चे, तो आधी बात समझ नहीं आएगी उनको. ठीक है. Zn2 प्लस है 0.001 इंटू प्रेशर ऑफ H2 इज 1 बार, तो सिर्फ 1 लिखा जाएगा यहाँ पे. एंड H प्लस इज इक्वल टू 0.01 स्क्वायर. So first we will calculate for log. देखिए लोगों ने क्या क्या किया हम आपको बताते हैं. I will tell everyone. Divide by, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0001
yes or no? सही है? Is that right? Yes or no? Please tell me guys. देखिए Yes sir, right. now ठीक है, अब क्या होगा log, this is 10 to the power minus 3, this is 10 to the power minus 4, this will be equal to log 10 to the power minus 3 into 10 to the power plus 4, minus 4 ऊपर जाएगा plus 4 हो जाएगा, this will be equal to log 10. वालेकुम अस्सलाम किंजा. Why are you late Kinza? You're half an hour late. So log 0.001 upon 0.0001 is equal to log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा. 1. तो ये आपको दिक्कत हो रहा था इसमें. क्या क्या बताएं हम, बताएं सहल सबको क्या किया है आपने. इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया. इन्होंने बोला log 0.001 upon 0.0001 is equal to 0.001 upon 0.0001. हाँ, यहाँ तक मेरी गलती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह सॉल्व करते हैं चीजों को कि लॉग को अभी छोड़ देते हैं, अभी लॉग को नहीं लिखते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 10, है ना, इसको हम लिख देते हैं 10. लेकिन हमको इतना दिमाग में रहता है याद कि हम लॉग नहीं लिखा है हमने, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू log 10 और फिर लिखते हैं इसको हम 1. I know that I do this also, but याद रहता है हमको. ठीक है, you have done the same thing sir, yes or no? I think he has also written something else. उनका वो भी सही नहीं आया है, स्क्वायर भी नहीं किया है इन्होंने, है ना. और हाँ देखिए बहुत स्क्वायर ही करना बढ़िया. भूल गया सर. स्क्वायर करना भूला नहीं है आप, जानते हैं क्या भूले आप, ये भूले हैं आप, है ना. बिना इक्वेशन के आपने नर्स्ट इक्वेशन लिखा कैसे? हाँ सहल, भूल गया केमिकल सर. रिएक्शन लिखा आपने, सेल रिएक्शन लिखा. नहीं भूल गया सर. हाँ, तो कबीरा गुनाह, ये कबीरा गुनाह है. ठीक है, एकदम ही बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में जब हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था उसी टाइम नोट लिखवाया था कि वी राइट नर्स्ट इक्वेशन कहाँ है. अल्लाह अकबर. ऑलवेज राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. हाँ, कोई फायदा नहीं. जब नर्स्ट इक्वेशन लिखते थे तब बोलते थे इस बात को, फिर भी बच्चे याद ही नहीं रखते हैं. बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ओके, यहाँ पे आप कुछ गलती कीजिएगा, एक बार गलती दो बार गलती में तो हम नहीं कुछ बोलते हैं, जब इतनी क्लासेस के बाद आप गलती कीजिएगा तब तो हम बोलेंगे. बट स्टिल डोंट वरी, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड एग्जाम में गलती ना हो, है ना, उसका खासा ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? एग्जाम में गलती ना हो. चलिए, now we are going to move on and we are going to talk about we have been talking about how much electricity is given. Now we want to relate this electricity and Gibbs free energy. Did we talk about Gibbs free energy? हमने बात की क्या Gibbs free energy की? नहीं बात की अभी तक, right? So whatever electricity we are getting, we are saying ना that it is spontaneous reaction, that is why we are getting. अच्छा, just a second guys, okay? जो लेट आए हैं ना उनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. किंजा, did you do these questions? हाँ किंजा, Yes sir. भेजिए हमें. ठीक है, क्लास कुछ किसी में दिक्कत है आपको, किसी एक में भी? नहीं सर अभी नहीं. अभी नहीं है क्या मतलब, बाद में हो जाएगा क्या दिक्कत? नहीं मतलब शायद दूसरे क्वेश्चंस में हो, इसमें नहीं है. अच्छा, इनमें नहीं है तो आपने सारे किए ना, तो हमको भेजिए क्लास के बाद आप. ठीक है, जी सर. ठीक है. Electricity and Gibbs free energy. Okay, so you have to relate that electricity and Gibbs free energy. You must know something. Whenever we are extracting energy ना, जब भी हम energy extract कर रहे होते हैं तो कोई body जो है ना, it is doing some kind of work. Okay, it is doing some kind of work whenever we are extracting. अब जैसे like for example when water is falling down, then water is doing the work and then we are extracting that particular energy. Okay, and then we are extracting that particular energy. Now, how is work related to voltages? Can someone tell me? किसी को फिजिक्स बहुत पसंद है तो वो बताइए. W is equal to इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं इसको? चार्ज टाइम्स वोल्टेज. यस और नो, प्लीज टेल मी.
Have you seen Yes this? sir. Yes sir. देखा होगा आप लोगों ने, है ना? ठीक है, हमको तो लाइक राइट ना अभी जो हाल है मेरा लाइक फिजिक्स का तो हमको याद भी नहीं है, लेकिन आई एम बीन यूजिंग दिस इन केमिस्ट्री सो लॉट कि हमको पता है कि ये होना चाहिए कहीं ना कहीं। कौन से चैप्टर में बताइए, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला भी चैप्टर। कैन समवन टेल मी करंट इलेक्ट्रिसिटी में है क्या ये, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, किसमें है? सर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सर। कैपेसिटेंस में है। जी सर। ओके, कैपेसिटेंस में, ठीक है, हम एक बार देखेंगे क्योंकि उसके मतलब इसकी फिजिक्स हम भूल चुके हैं, बस ये अभी हमको रटा हुआ है इस हिसाब से देखिएगा तो। But right now I know how I have to deal with this, and I have to bring in chemistry here. I can say that the potential in a cell that will be equal to what? Potential in a cell will be equal to the E naught cell, right? E naught cell, or we can write in general E cell. Standard condition में E naught लगा सकते हैं हम लोग, right? Don't write anything here. यहाँ पे कुछ लिखेगा नहीं, आप लोग कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखाएंगे हमें। Now, if I talk about the charge, this is what? This is your charge, right? Charge. Now, the number of electrons that those are moving, that is my charge, right? So charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Now, generally when we write some reactions, for example, H plus electron giving me half H2, then we are talking about that one electron is getting transferred, right? But एक electron तो कभी जाएगा नहीं, right? So when reaction happens, this reaction is happening such as 1 mole of H plus requires 1 mole of electron to give half moles of H2 gas, right? So we are dealing in terms of moles in chemistry. What is the how what we deal with? We deal with always moles. So here we are going to write charge on 1 mole of electron. This will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the charge on 1. And we have how many? In 1 mole, we have 6.022 into 10 to the power 23 electrons. Now this number, if you multiply this, this will come out to be 96500 coulombs. Now this 96500 coulomb, it is known as 1 Faraday. This number is known as 1 Faraday. This is also known as Faraday's constant. No need to write, ये सारी चीजें फिर से हम लिखेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी आप समझिए फ्लो, ठीक है, Faraday's constant. We call this Faraday's constant. Now, if I have for n moles of electron, for example, we are having a transfer of 6 electrons, or that means 6 moles of electron, 3 moles of electron, or 2 moles of electron, whatever n we write in the Nernst equation, that n I am referring to here. Okay, for n mole of electrons, Q will be equal to n times F, क्योंकि देखिए चार्ज जो आपके पास था एक मोल के लिए कितना था 1F, and for n moles it will be equal to nF, और इसको आप ध्यान रखिएगा, this is what equal to, it is equal to n into 96500 coulombs. Faraday, एक Faraday किसके बराबर होता है 96500 coulombs, ठीक है? So please remember both of these things. Now once again coming back to my W is equal to Q into V. I know that Q is equal to what? NF, and my V is equal to the E cell. V is equal to E cell. This is my work done by the cell. This is the work done by the cell. जब सेल काम कर रहा है और वो काम का फायदा किसको हो रहा है? काम का फायदा इंसान को हो रहा है, right? So let us, for example, let us just imagine. I know that you must be remembering in thermodynamics. अगर याद हो आप लोगों को, Gibbs free energy की absolute value we cannot have, but for say, for example, let us say we have a cell. Okay, initially it is having 10 joules of energy, and it is doing some work. That means it is giving me some electricity, and it is giving me how much electricity? It is giving me 6 joules of electricity. So this was the initial phase. So final में इसके पास कितना बचा रहेगा? सिर्फ 4 joules, है ना? And it has given to me human 6 joules of energy. That means it has done what work? It has done a work of 6 joules. Now please see, if I say what is the work done, so work will be equal to how much? 6 joules. All of you will agree with this. Work is equal to 6 joules. But if I talk about the delta G, the change in Gibbs free energy, so we can write final minus initial, right? This is not a formula because absolute Gibbs free energy we can never have, but we are trying to get a formula between work done and the delta G. So final minus initial will be equal to 4 minus 10, which is equal to how much joules? Minus 6 joules. Now we can relate here. We can say that the work that a cell is doing, it is equal to minus, or rather I should say like this, delta G जो हमारे पास आया है, whatever delta G we are having, it is equal to whatever the work done there is with a minus sign.
So delta G is equal to the negative of work done. Okay, so this is something that we have derived right now. इसको please याद रखिएगा. Now we are going to write everything. All of you understood each and everything that I wrote from W is equal to Q into V. Till delta G is equal to minus W. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. Okay. Now right here, in the case of electrochemical cell, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एक सिस्टम के पास ना, like the total amount of energy a particular system has, it is known as Gibbs free energy. जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान काम करते 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 इतना काम करे इतना काम करे इतना काम करे कि खत्म हो जाए. ओके, तो जितना काम वो करेगा ना, that will be related to Gibbs free energy. इसलिए absolute terms में कभी भी हम लोग Gibbs free energy नहीं फाइंड कर सकते हैं. We can only say that मतलब द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना है, क्योंकि अगर आप टोटल डिटरमाइन करने जाइएगा तो टोटल कभी डिटरमाइन होगा नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते. एक्सपेरिमेंटली वो कैलकुलेट होगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंटली get the Gibbs free energy of any system, you have to destroy the system. You should extract all the work that it has. You have to extract all the energy, and once you have extracted all the energy, that system will be completely gone. And when the system is gone, there is no use of the value that you have extracted. Okay. Right, next. What I am saying, in case of आपको कुछ आइडिया लगा क्या है गिब्स फ्री एनर्जी? The case of electrochemical cell, Gibbs free energy is related to the work done by cell. Change in free energy is equal to वर्क डन बाय सेल. ठीक है, हम दोनों में हम मॉड लगा दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन. ठीक है, राइट, नेक्स्ट. As you should know that as W is equal to Q into V, and you can also write, wait a second. Don't write E naught. Q into E cell. Q, that is charge in. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टाइक सेल. तो सवाल में कहीं वोल्टाइक सेल आ जाए तो घबराइएगा मत. ठीक है, सो Q in voltaic cell is related to the number of electron. Okay, and we can write Q on 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Q on 1 mole electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.022 into 10 to the power 23. So this will be equal to 96500 coulombs. अच्छा, ये approximately equal होता है. ठीक है, exactly इतने के बराबर नहीं होता ये. It's approximately equal to 96500, and this will be also equal to 1 Faraday. It is also known as Faraday's constant. और you can take this as a value of 96500. आपको जो exact value याद करने की जरूरत नहीं. For n moles
of electron, Q is equal to NF. So be also equal to N into 96500 coulombs. Now we can write as delta G is equal to minus of W, and W is equal to Q into V, which is Q is equal to NF and V is equal to E cell. We can write delta G will be equal to minus of NF E cell for standard conditions. Delta G naught will be equal to minus NF E naught, sir. तुमने लिखा तो बताइएगा प्लीज. Done, sir. Okay. Write some remarks. Galvanic cell is also the name of electrochemical cell only. Okay, so electrochemical cell, galvanic cell, voltaic cell, all of these are same. Galvanic cell will work only if E cell is positive. Okay, E cell is positive because when E cell is positive, delta G will be, बताइए. तो हमारे पास E cell पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव होगा. वेरी गुड. डेल्टा G will be नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस. डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव. एनर्जी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस. फिर से हम बता रहे हैं आप लोगों को, एनर्जी के केस में पेन लीजिए, पेन को आप जमीन पे गिराइए. यहाँ पे जब पेन h हाइट पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी समथिंग, लेट अस से सम 10, आप मान लीजिए 10 यूनिट्स. ओके, कुछ भी किसी भी यूनिट में 10 यूनिट. जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी जो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू 0. तो ये इनिशियल केस था, ये फाइनल केस था. फाइनल माइनस इनिशियल इट इज इक्वल टू हाउ मच? -10. तो आपके पास दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस चेन. यू डिड नॉट नीड एनी, human has to not help a pen to fall down.
एंड जब भी आपके पास स्पॉन्टेनियस चेंज आता है तो यू विल गेट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. सो व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव शुड बी स्पॉन्टेनियस. लिखिए सबने. चलिए, और डन. अरे हाँ ना, जल्दी बताइए. लिखिए होगा. चलिए एक और पॉइंट लिखिए. वैसे तो एक और पॉइंट लिखना है. राइट, नेक्स्ट मैक्सिमम वर्क डन. by SL is equal to the negative of delta G naught. ठीक है, that means it is equal to NS E naught cell. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं, that means we are talking about the system right now, the cell right now. सेल का सबसे ज्यादा कितना काम कर सकता है, तो वो 5 जूल का काम कर सकता है, 10 जूल का काम कर सकता है, राइट. उससे हम लोग को कितनी एनर्जी मिलेगी, तो हम लोग को मिलेगी 10 जूल की एनर्जी, 5 जूल की एनर्जी. तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय समथिंग, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज अ फिजिकल थिंग. कोई चेंज, कोई चीज हो रही है, राइट. जैसे कि आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट. यू कैन नॉट हैव अ डिस्टेंस व्हिच इज इन नेगेटिव. सिमिलरली यू कैन नॉट हैव टेम्परेचर एज नेगेटिव, है ना. इसी वजह से डिग्री सेल्सियस स्केल को हम लोग यूज नहीं करते हैं. वी डोंट यूज डिग्री सेल्सियस स्केल बिकॉज डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है. बट अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अगर आप बोल रहे हैं -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल. -5 क्या होता है, अगर टेम्परेचर कुछ है, इफ यू आर मेजरिंग समथिंग, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा. ठीक है, जिसको समझ में है थोड़ा सोचिएगा इस बारे में कि डिग्री सेल्सियस को नहीं लेते हैं, केल्विन को लेते हैं. क्यों लेते हैं केल्विन को, बिकॉज केल्विन नेवर गोज टू नेगेटिव एंड अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. Okay, write these two things and then write a question. Write this down.
Raise your hand if you don't know what to do. Raise your hand if you don't know what to do. अरे सबको पता है, सब कर रहे हैं, चलिए ठीक है तब। E0. Yeah, that's correct, Adriel. Then you have to also determine the number of electrons. Please remember that. Okay. सही है, E0 is correct. Yeah, correct. Adriel, very good. That's right. What about others? What happened, guys? No answers till now? नहीं आ रहा सर, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्या? जैन, आप तो अभी आए हैं लगता 15 मिनट पहले, है ना जैन? You just came in ना? हाँ। What about others? Raise your hand अभी तक जिसका कुछ नहीं आया, E0 भी नहीं आया. Please raise your hand. Abdul Rahman, what happened? Got this या नहीं आया? Yes sir, doing. Doing मतलब कहाँ तक पहुँचे? क्या कर रहे हैं ये बताइए आप. सर What are अभी you नोट से doing? कैलकुलेट कर सर लास्ट स्टेप से E and G. अच्छा चलिए ठीक है. हाँ ये सही है आपको फहद, वेरी गुड. फहद, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर नाउ? नहीं हुज़ैफा सही नहीं है ये तो. चलिए देखिए. Yes, sir. हम आपको बता रहे हैं. ओके प्लीज लिसन गाइस हियर. ओके सी, कैलकुलेट कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक? जिंक टू जिंक 2+ इज व्हाट? गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड? टेल मी. दिस इज द सेल रिएक्शन ना, दिस इज द सेल रिएक्शन. Oxidized. कभी नहीं देखा ऑक्सीडाइज. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस और नो प्लीज टेल मी. समायरा, Yes, sir. हुज़ैफा, ठीक है, वेरी गुड. दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट? सो ऑब्वियसली Ag विल बी गेटिंग व्हाट? Ag का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन. यस और नो प्लीज टेल मी. Yes sir. हाँ Yes. ठीक है. तो देखिए बहुत ही आसान था E0 सेल तो ना. E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन. ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके पास जिंक का. जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? वी हैव Zn2 + 2Zn माइनस, तो विल राइट दिस एज प्लस 0.76 प्लस E0 रिडक्शन. आपके पास Ag का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ही दिया हुआ है 0.80 प्लस में, एंड दिस विल गेट एज 1.56 वोल्ट्स. ठीक है, तो E0 सेल आ गया. अब आपको हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF
E naught of cell. Delta G naught निकालना, तो G naught is equal to minus NF E naught of cell. What did I tell about the N? What you have to do? किसी भी एक आयन को आप ले लीजिए, डेल्टा OS into stoichiometry, right? तो यहाँ पे देखिए जिंक ही आपको आयन दिख रहा होगा, तो जिंक आयन को लीजिए, जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ऑल ऑफ यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 2, राइट? जिंक इज 0 हियर, यहाँ पे जिंक इज हाउ मच? 0, and here zinc has oxidation state of +2. So the change is how much? Change is of 2. What is the stoichiometry of zinc here? It is 1. Multiply this by 1, you will get this as 2. So number of electron is equal to 2. So you're going to write 2 into minus 2 into 96500 into E naught of cell is 1.56 volts. This will be equal to 301080 volts. बताइए what happened guys? नहीं, उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी ना? Yes or no, please tell me. हाँ guys, tell me what happened. ओहो, कुछ तो जवाब दीजिए। वो एन ढूंढने में मसला हो गया सर। एन ढूंढने में मसला हो गया, मसला समझ में आ गया कैसे हल होगा? जी सर। बाकी बात बताइए, बाकी समायरा, मैमूना। तो सेम सर, एन का होगा तो प्रॉब्लम। एन का मसला हो गया, ठीक है। अब मसला क्लियर हो गया, आई थिंक नाउ यू गाइस नो, ठीक है। और आई मीन दिस इज वन ऑफ लाइक इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इक्वेशंस जहाँ पे आपको थोड़ा मसला होगा एन निकालने, बट स्टिल जो आपको हमने बताया था that is still valid, right? Delta OS into stoichiometry. Okay, now write another question. अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल है, इसको छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन। आपको पता है मैक्सिमम वर्क डन कैसे निकलता है? फॉर्मूला हमने दिखाया अभी रिमार्क्स में, है ना? कैलकुलेट कीजिए इसके लिए, एंड आई थिंक दिस इज अ सिंपल वन। यहाँ पे मसला नहीं होगा सहल आपको एन का। एन कितना सहल बताइए तो ऐसे ही, व्हाट इज द एन सहल? 2 सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा चलिए, ई नॉट सेल भी बता दीजिए, ऐसे ही बताइए, ई नॉट सेल बिना पेन उठाए, ई नॉट सेल बताइए बिना पेन उठाए। अच्छा, एक मसला यहाँ पे आपको ये होगा, यहाँ पे डेटा गलत दिया हुआ है, ठीक है। वेट 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 एक सेकंड, ओके। 9 अच्छा, ये भी ni2 अच्छा प्लस ni होगा। हाँ, ये zn वहाँ पे वैल्यू गलत तो लिखा सेम ही हुआ। होगा ना लेकिन। हाँ, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। हाँ बताइए कितना है तो ni2 आपका सेल? इट विल बी 0.25 प्लस 0.80। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया आप सबके लिए, है ना? मतलब बिना पेन उठाए भी आप लोगों को आंसर पता चल रहा है। एड्रियल सही कहा उन्होंने? ऑल ऑफ यू एग्री विद हिज आंसर और ई नॉट सेल? यस एड्रियल, टेल मी। No, sir, I was gonna say 1.05. हाँ, तो उन्होंने भी तो वही कहा, उन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया 0.80 प्लस 0.25, ऐसे बोल दिया उन्होंने। Yes, sir, I was gonna say that, but then he spoke, so I अच्छा just stopped. अच्छा, चलिए कैलकुलेट दिस। अब आपको बस वहां पे एन एफ, हाँ ये याद रखिएगा प्लीज, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है ना? आप लोगों को पता होना चाहिए मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू, बताइए इट इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट्स द फॉर्मूला? क्या लिखा था हमने? जल्दी बोलिए। Minus delta G. हाँ, माइनस डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? एन एफ And ई नॉट सेल। NFE is not cell. ई नॉट सेल लिखा है ना हमने, ई सेल लिखा दिया? नहीं नहीं, E ई नॉट not सेल ही cell. होगा, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन ही आपका मैक्सिमम वर्क हो सकता है बस। हाँ, वेरी गुड जैन, बस कीजिए, जल्दी कीजिए, आसान। Does anyone uses VS Code for writing? Like अगर आप लोग Python पढ़ रहे हैं तो VS Code को यूज करता है क्या? Anyone here? No. Okay, fine. And let me know. Am I audible? Zoom is saying that my internet is weak. Am I audible? Is my voice breaking? Not breaking. Okay.
Samira has sent the answer. Okay, positive में सही. I think that is right. Okay, wait a second. Samira, check your calculation maybe. अब पता नहीं, दो लोगों का अलग अलग आंसर आया है. I don't know which one is correct. Samira आपका सही है. और अभी हमको किसने भेजा? जैन आपका सही नहीं है. Recalculate कीजिए जैन. Atil, that is correct. Atil आपका सही है. That will be in joules, okay? एनर्जी जो होगी ना जूल्स में होगी, वोल्ट्स में नहीं होगी. जस्ट करेक्ट दैट थिंग. यस फहद, वेरी गुड. अगेन जस्ट इट विल बी इन जूल्स, नॉट इन वोल्ट्स. अब्दुल रहमान, आई थिंक वो किलो जूल लिखना चाह रहे थे आप वहां पे. सही है. सर यस अब्दुल, बताइए जी. जैन बोलिए. V0 is 1.05 ना, 2.5 plus statement 0. हाँ 1.05 होगा ई नॉट सेल तो. हाँ तो 1.05 into 2 ना, हाँ इंटू 2 भी तो करेंगे. हाँ सही है. into 96500. हाँ इंटू 96500 96500. ये क्या, अरे डेल्टा जी नॉट नहीं है वो. ऐसे लिखिए, मैक्स वर्क डन इज इक्वल टू NF नॉट सेल. ठीक है, जिन लोगों ने डेल्टा जी नॉट लिखा ना उसको काट दीजिए प्लीज. इसको लिखिए. और पॉजिटिव में होगा ना मैक्स वर्क डन, तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.05. ये आंसर आएगा जूल्स में. हाँ नाउ इट इज करेक्ट जान. हाँ किंजा आप सही है आपका भी. 202650 जूल्स. इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 202.65 किलो जूल्स पे लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए. देखिए, now we are going to do another question. Okay, now we are going to do another question, and here what we have to see whether a reaction is feasible or not. एक रिएक्शन feasible तभी होगा जब आपके पास क्या हो, डेल्टा जी नेगेटिव में हो. Okay, when the delta G is negative. If you look at this question, please look at this question. For solution of first one, I'm taking the first one, okay guys, and I need your help guys. Okay, I need your help guys. Now in this question you all tell me what is reacting. Fe3 plus is reacting with I negative. Okay, Fe3 plus is reacting with I negative. I will react Fe 3 positive plus I negative. So I negative is going to give me 1 electron, and Fe3 plus will eat 1 electron. It will give me Fe2 plus, and I will get half I2. Half I2 gas. Okay. And also you can see that Fe3 plus is converting to Fe2 plus यहाँ पे. Okay, you can see it here. All of you can see that Fe3 plus is getting converted to Fe2 plus. Okay. Now listen and tell me this change
this change is happening and it is giving me energy or taking energy, and if then how much electricity? बताइए, how much electricity for this change Fe3 plus to 2 plus? What is given in the data? This is taking how much energy? Or giving how much electricity? Fe3 plus to Fe2 plus. Look at the data and tell me. If I am going from Fe3 plus to 2 plus, how much electricity is given or taken by the cell? अरे क्या हो, क्या लिखा हुआ तो है आंसर? 0.77 प्लस या माइनस देख के बताइए. प्लस, ठीक है. Others can also see, I hope. And what about this I negative? If I am going from I negative to I2, how much electricity is given or taken? Tell me, guys. How much electricity is taken or given? -0.54 minus 0.54. है ना, very good. Minus 0.54. Very good, guys. 54 volts. ठीक है. यानी कि इस पूरे रिएक्शन में the whole reaction, the E naught will be how much? 0.77 minus 0.54, है ना. इसमें इतना इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इसके चेंज से हमको इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. So this will be equal to how much? Tell me, guys. 0.23 volts. Okay, you will write next. Since E naught cell is positive, delta G naught will be negative and reaction is, बताइए reaction क्या होगा? Spontaneous and non-spontaneous? Reaction will be Spontaneous. Spontaneous. very good, spontaneous. ठीक है, चलिए. Do for the next one and tell me. Do for this AG. तो आगे बताइए समायरा, पूरा लिखिए ना. E naught, since E naught cell is positive, delta G will be negative and reaction is spontaneous. जो भी लिखना है. या फर्क सही है. अच्छा, एक और चीज था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही आप सोचिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो लग रहा होगा ओ माय गॉड जमाना हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए, जबकि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ही क्लास लिया हमने इसका,
ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज ध्यान में रखिए, वो भी पढ़ते रहना साथ साथ। ओके, व्हेन पीपल वे, जब आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था, देन आई यूज्ड टू टेल दैट यू शुड डू 2 थिंग्स एवरी डे का। एक क्या होना चाहिए? न्यूज़पेपर रीडिंग। अरे न्यूज़पेपर का मतलब न्यूज़पेपर निकाल के मत बैठिएगा। लाइक न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं हम लोग? पूरा न्यूज़पेपर तो कभी नहीं पढ़ते हैं। तो नोट्स में जो क्या करते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के ना, तो उसी तरह नोट्स में भी आपको क्या कीजिए, डेली आपको करना है। केमिस्ट्री के नोट्स उठाइए और जो भी आपको हेडिंग्स दिख रहे हैं ना, जस्ट रीड दैट हेडिंग्स इन ईच पेज। ठीक है, लेकिन ये है कि डेली कीजिएगा तो बहुत ज्यादा ही फायदा होता है इसका। ओके, आप इमेजिन कीजिए एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, जब आप आंसर लिखते हैं ना, व्हेनेवर ऑल ऑफ यू राइट आंसर्स, देन यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पेज, राइट? है ना? यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पेज ना, कि लेफ्ट साइड में 2 साइड होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर नोटबुक, राइट? यहाँ पे आंसर वो लिखा होता है, आप एग्जैक्टली वही आंसर याद करके आता है। योर विजुअल मेमोरी शुड बी दैट शार्प। और वो कैसे होगा? एक चीज को आप देखते रहिएगा, अगर डेली केमिस्ट्री के पेज आप सिर्फ फ्लिप कीजिए डेली, आपका ब्रेन तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है, बट हाँ, यही चीज है कि डेली कीजिए इसको। हेडिंग्स जो होते हैं ना, आप जा रहे हैं बस में मान लीजिए स्कूल के लिए, भले ही आपको बोले बच्चे लोग कि कितना पढ़ाकू हो गया है, ज्यादा ही पढ़ने लगा है कुछ, है ना, तो बोलिए हाँ हम भी पढ़ रहे हैं, आके तुम भी पढ़ो बैठ के साथ में। देयर इज नो शेम इन दैट। ठीक है, पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं स्कूल, क्यों जा रहे हैं? दोस्ती निभाने थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। जब आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ पेज पलटिए। ठीक है, और न्यूज़पेपर में क्या होता है, कोई हेडिंग आपको, कोई हेडलाइन आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी केमिस्ट्री में कोई मान लीजिए आपके पास ऐसा टॉपिक है, अरे ये सर कब पढ़ाए थे, ये तो हमको याद ही नहीं सर ने कभी पढ़ाया था, ऐसा कोई टॉपिक लगे तो फिर उसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, बट ये चीज आपको ना डेली करना पड़ेगा, एंड दिस इज फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू टेक एट मैक्स आई वुड से हाउ मेनी मिनट्स, 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप केमिस्ट्री नोटबुक के सारे पेजेस पलट तो लीजिएगा ना? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। I hope you guys agree with me here. In 15 minutes, you can at least read the headings. हाँ या ना? कोई जवाब नहीं देता। सब तब पकड़ के मारते हैं आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में रहते तो। Tell me, Adriel, Samaira, Kinza, in 15 minutes you can do that? Yes or no? Yes, sir. Yes, Sure. sir. ठीक है, तो अब लाइक यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है, एंड आई एम सेइंग दिस, ये बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग डेली इस चीज को पढ़े तो एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि आपको बहुत फायदा होगा। एक एक चीज आपको पता होगी कि ये यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे ये आंसर, ऐसे ये सवाल तो हम डेली पढ़ते थे। ठीक है, एंड देन ऑन द डेज व्हेन यू आर हैविंग क्लासेस, दैट मीन्स आपकी क्लासेस कब कब होती हैं? मंडे एंड वेंसडे। मंडे एंड वेंसडे, ठीक है, तो ऑन मंडे एंड वेंसडे व्हाट यू हैव टू डू, you have to remember the rule of 15 minutes. ठीक है, तो मंडे को आपको क्या करना है, 15 मिनट्स बिफोर द क्लास एंड 15 मिनट्स आफ्टर द क्लास। 15 मिनट्स बिफोर द क्लास, लास्ट क्लास, है ना? 15 मिनट बिफोर द क्लास आप देखिए 15 मिनट एट मैक्स आपको बोल रहे हैं, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया हमने। और ये जो 15 मिनट है यू शुड रीड जो आज की क्लास में हुआ है। ठीक है, फिर अगले दिन वेंसडे के दिन फिर क्या कीजिएगा, फिर 15 मिनट लास्ट क्लास जो सर ने पढ़ाया, और फिर क्लास के बाद 15 मिनट उसको आप फिर से दोबारा पढ़िए। ओके गाइस, चलिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू जी मस्ट हैव सर। गॉट फॉर एजी एंड सीयू। कितना आया होगा आप लोगों का? 0.46 है ना शायद, जी सर। 0.46 volts, right? And that is why it will be spontaneous, non-spontaneous, बोलिए। Spontaneous. Okay, moving on to the next topic. Please write Nernst equation and equilibrium constant. अच्छा, एक चीज आप लोगों को हम बताते हैं। Adriel, after you asked me regarding that 0.1 ना, for example, if I have anti-log of 0.1, you asked something regarding this na? Yes, sir. 10 raised to Yes, okay, fine. So I found out one more pattern that may be helpful. For example, if you have 10 to the power 2.1, okay, so 10 to the power 2.1. So this 2.1, 21 is
it can be multiplied by it is a multiple of 3. If it is a multiple of 3, then this 10 to the power 21 is equal to 21 is equal to how much? It is equal to 3 into 7, right? Yes or no? Yes, sir. So this will be equal to, हमने देखा, this will be equal to 2 to the power 7. एक बार देखिए तो I think this is something that I found. 10 to the power 2.1 is equal to how much? 125.8. Is equal to 125.8. And 2 to the power 7. अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह कुछ तो था. हाँ. 2 to the power 7, it is equal to 128. And 10 to the power 21. So as you can see, it is very similar. है ना? So 128 and 125.8 इसको अब अगर approximate कीजिएगा तो 126 हो जाएगा. So these values are very nearby. ठीक है? Similarly, if you have 10 to the power 2.4, so this will be equal to how much? Approximately, I can say this will be equal to 2 to the power कितना बताइए? Tell me guys. 8. Very good. ठीक है? So whenever you get something now, which is a multiple of 3, then you can use this formula. So in exams, so if the log if the value is close enough, is it okay or? हाँ 5% आपका जो है ना, देखिए एरर जो है ना 5% चलता है. ठीक है? 5% मीन्स अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस वन ना, यहाँ पे आप एरर कैलकुलेट कीजिए 126 एंड 128 का एरर कैलकुलेट कीजिए कितना होगा. द करेक्ट आंसर इज दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू. फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा होगा. हाउ मच इज दिस? व्हाट इज द एरर परसेंटेज हियर? Around 1%, I think. 1%. आई थिंक का क्या मतलब? कैलकुलेट कीजिए. Hmm, 1.5 होगा आई थिंक, राइट? 128 minus 126, actual expected minus actual, whatever you have got. ठीक है? And divided by 2. This will be equal to how much? This is 128. Sorry, not 2, 128. So 2 upon 128. So approximately 1.5. ठीक है? तो that much error is fine. 5% तक का error चलता है. Okay. So that 5% error is only for chemistry or like any other subject except maths? नहीं, अगर कैलकुलेशन एरर्स जो होता है ना, वेट अ सेकंड, हम लाइक एक्सेप्टेबल इन ओलंपियाड. I will tell you. I will send you something, okay? In which I have ये बात जो है ना 5% वाली. This was told to me by my teacher, and she checks the paper of the International Chemistry Olympiad. Okay, so she told me that 5% error अगर आपका है, तो then it is fine. I mean that much is expected. उतना आपका calculation error हो सकता है. Multiplication वगैरह में नहीं, ठीक है? When you are having log, जहाँ approximations की जरूरत होती है. Where you don't have the exact values and you don't have the calculator in those cases. Will you write this Nernst equation, equilibrium constant? Please write when current becomes. Achha, who remembers what happens at equilibrium? Adil, what happens at equilibrium?
To what, sir? सॉरी, To what exactly? नहीं, ये आपको याद रहना चाहिए। हम एक लाइन बहुत बोलते थे केमिस्ट्री में, मतलब 11th क्लास में। अब्दुल रहमान, टेल मी व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। नहीं याद। समायरा, टेल मी व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। Concentration of product is equal to concentration of reactant. चुप हो जाइए आप, बिल्कुल एकदम गलत बात बोल रही हैं आप। कंसंट्रेशन इक्वल तो होता नहीं है, सबसे पहले कांस्टेंट हो जाता है वो अलग बात है, ठीक है, इक्वल तो होता नहीं है। ठीक है, आप मत बोलिए आप। मेमुना, आप बताइए व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। आवाज नहीं आ रही मेमुना। नथिंग हैपेंस एट इक्विलिब्रियम, याद नहीं है आप लोगों को? याद आया कि नहीं आया? याद आया? हाँ, समायरा, अब्दुल रहमान, एड्रियल, नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? Yes, sir. आया सर। पूरा व्यर्थ हो जाता है मेरा पढ़ाना तो। कहाँ है बैच इलेक्ट्रो इक्विलिब्रियम? देखिए क्या लिखा हुआ है, नथिंग हैपेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नथिंग हैपेंस। पूरा इतनी अच्छे से पढ़ाया था एक चैप्टर के बारे में। इक्विलिब्रियम हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या बताते थे? चैप्टर 1 क्यों पढ़ा, फिर चैप्टर 2 क्यों पढ़ा, 3 क्यों पढ़ा, 4 क्यों पढ़ा, 5 क्यों पढ़ा। ये सारी चीजें याद रखिए, आपको केमिस्ट्री में ना कॉन्फिडेंस फील होगा बस। ठीक है, दैट यू नो लाइक इन एंड आउट ऑफ केमिस्ट्री। कहाँ है, कौन सा बैच है भाई आपका? ई बैच, right? When current becomes zero, obviously in equilibrium nothing happens. Okay guys, what happens at equilibrium? Nothing happens at equilibrium. Nothing का मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। Nothing happens which we can see. There is no change happening that we can see. Okay, so whatever change is happening that we cannot see. For example, the concentration is going to be same, the temperature is going to be the same, the pressure is going to be the same. ये सारे जो macro हमारे पास variables होते हैं, whatever we can measure, all of these things are constant. Okay, so there is no measurable change happening in the system. और जब हम लोग चेंज देख ही नहीं पा रहे हैं, अब सिस्टम में कुछ हो चाहे नहीं हो, when we can't see the change, then nothing is happening in the system. Okay, so when nothing is happening in the system and we have a cell, nothing is happening in the cell, that means the reaction is not happening in the cell. And if the reaction is not happening in the cell, that means current will become zero. When the current becomes zero, it is said that equilibrium has been achieved. When current becomes zero, it is said that equilibrium has been achieved. When the current will become zero, for example, I have a reaction Zn plus Cu2 plus will be in equilibrium with Zn2 plus copper. Okay, and E cell, I'm writing this for general thing, E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 divided by N into log Q. This was my Nernst equation, if you remember. Log Q क्या है आपका? Product upon reactant only, right? Equilibrium chapter में you would have learned this. Q is equal to what? Product upon reactant, concentration of product upon concentration of reactant. At equilibrium, please remember this line is very important guys. Okay, इसको 10 बार पढ़िएगा आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी तो। At equilibrium, please write at equilibrium, E cell will be equal to 0 because no current is flowing, and this is more important, log Q will be equal to log Kc. Rather, I should just write Q is equal to Kc. Okay, Q is equal to Kc. What is Kc? Kc is same thing, concentration of product upon concentration of reactant, but Kc says that this is the concentration at equilibrium. Okay, so the concentration of product upon the concentration of reactant at equilibrium is equal to Kc. At any other stage other than equilibrium, at any stage other than equilibrium, concentration of product upon reactant is equal to Q. At equilibrium, it is equal to Kc. That's why I am writing at equilibrium, E cell is equal to 0 and Q is equal to Kc. This will give me E cell 0 is equal to E naught cell. E naught cell will be E naught cell only. There will be no change in E naught cell minus 0.059 divided by N log Kc. And we can write further on. What can we write?
E naught cell is equal to 0.059 divided by n log of Kc. This is a equation that you have to remember in order to calculate the equilibrium constant for any reaction. Equilibrium constant for any reaction. Please write this down. Let me know when you are done. सबने लिख लिया? Done? Okay. Now let us look at the previous question. हमने किया था ये वाला, ठीक है? So in this question we have to calculate the equilibrium constant, right? So now you are going to calculate the equilibrium constant. Oops. ठीक है? और यहाँ पे अब ये लाइन जो है नीचे आ जाएगी. You don't have to calculate the maximum work. You just need to calculate the equilibrium constant at 25 degrees Celsius. Okay, I am doing this one for you guys. You should remember that E naught cell is equal to how much? आप लोगों ने calculate किया था 1.05 volts, and I can write E naught cell is equal to, for equilibrium constant, at equilibrium it is equal to 0.059. How many electrons? 2 electrons. Log of Kc. I need to find this Kc only. I need to find this Kc. So E naught cell is equal to how much? चलिए log Kc लिख देते हैं. Log Kc will be equal to 2 times E naught cell upon 0.059. Right? This will be equal to how much? 2 into 1.05 divided by 0.059. ये जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. This will come as 35.59, which you can write it as 35.6. ठीक है? हाँ, बात करें. 35.56, 35.5956 हो जाएगा. This is what? This is log Kc. You should remember that log should have a base of 10. That means we need to find Kc. What will be Kc? 10 to the power 35.6 is equal to Kc. यही होता है anti-log. ठीक है? Anti-log जो होता है ऐसी, Kc आपको equal to क्या हो जाएगा? 10 to the power 35.6. ठीक है? 10 to the power 35.6. और 3 से मत डिवाइड करने लगेगा एडियल मल्टीपल देखने के लिए. ओके, व्हाट यू कैन डू हियर डायरेक्टली, यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 10 to the power 35 plus 0.6. further you can write Kc is equal to what? 10 to the power 35 into 10 to the power 0.6. अब बताइए, what is 10 to the power 0.6 guys? What is 10 to the power 0.6? 4. Very good. बाकी कोई और बताइए. 10 to the power 0.6 is equal to how much? Kenza, you tell me. Yes, Zan, correct. Kenza, आप बताइए 10 to the power. हाँ. 4, sir. Very good. ठीक है. So this is the use of log. So Kc will be equal to 4 into 10 to the power 35. चलिए. Write this down, guys. अच्छा, एक और चीज. Tell me which time suits you guys. Raise hand for this.
दिस इज केस है 6:30 to 8 रेज हैंड फॉर दिस। अरे भाई साहब और कोई नहीं आएगा क्या? नो वन एल्स? व्हाट हैपेंड? सर क्या 4 हुआ? से 6 ठीक है। 4 से ज्यादा ठीक है? क्यों? 4 से 6 6:30 से क्या है? नहीं, शाम में अगर कहीं बाहर गए पता नहीं, शाम में प्रोग्राम कुछ भी बन सकता है। अरे एग्जाम आ रहे हैं, वो एग्जाम आ रहा है, बाहर जाएंगे, पढ़िए अभी। बाहर जाने का नहीं, कोई और क्लास है तो बताइए। बाहर जाने का नहीं है सीन कुछ भी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है ना भाई आप लोगों का तो एग्जाम में, उसी वजह से क्लासेस ले रहे हैं हम। खत्म हो जाएगा तो आप लोग को भी आराम होगा। एग्जाम रहता तो एग्जाम के प्रेशर में आप लोग जैन हुजैफा, अच्छा जैन वगैरह आप लोग का एग्जाम हो गया क्या? जैन एंड हुजैफा संडे को मैथ का पेपर है। संडे को, मंडे को? नहीं आई थिंक संडे को है मैथ का पेपर। संडे को मैथ्स का पेपर है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये केमिस्ट्री 13 को है लास्ट पेपर। 13th का केमिस्ट्री है ना। आप देखिए लाइक हाउ अबाउट मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग में ना ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जुमा है, ठीक है। हम आप लोग का मॉर्निंग होगा जब तो मेरा नमाज होगा। हाँ तो आपकी जुमा से पहले हमारा जुमा होगा, समझ रहे हैं हुजैफा आप? तो थोड़ा मुश्किल है उस टाइम। बाकी फहद को क्या दिक्कत है? फहद टेल मी। सर कुछ दिक्कत नहीं है। आप फाइन, आप ठीक है ना? 6:30 से 8 आपके लिए हाँ सर चलेगा। चलेगा ना? मैमुना ये लास्ट है, ठीक है, मेरा वादा। अब पिछले फ्राइडे भी आप लोग आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया ये, लेकिन मेरा वादा ये लास्ट है, ठीक है। मैमुना आप कुछ कह रही थी? Sir, 4 to 6 is better to be honest because 6:30 to 8 it's usually self-study time. So we have other subjects also. So तो 4 to 6 आप कर लीजिए सेल्फ स्टडी एक फ्राइडे। जी सर मैं भी वही बोल रहा था। क्या बोल रहे थे आप? 6:30 to 8 आपका सेल्फ स्टडी टाइम है? सर 4 to 6 ही बेहतर है ना, मोस्टेड 4 to 6 ही छोड़ा। 4 to 6 चलिए तब 4 to 6, 4 to 6 के लिए रेज योर हैंड, लो योर हैंड इफ यू डोंट वांट 4 to 6। 4 to 6 के लिए रेज योर हैंड। अच्छा ठीक है, चलिए काफी लोग रेज हैंड किए 4 to 6 के लिए। एक और हम ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी कैन डू वन मोर थिंग। अब हम इंडियन टाइम देंगे, ठीक है। हमको बस यही टाइम समझ में आता कैसे का, उसके पहले का हम भूल ही जाता सब कुछ। लेकिन अगर हम ये करें ओ माय गॉड, कन्वर्जन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। 2 बजेगा आपके यहाँ तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? 4:30, 4:30 से ये 4:30 से आप लोग अब ये बताइए। कोई नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। सर 2 o'clock से या 3 से? 2 से 2 से 2 से 3 यानी कि हमारे यहाँ 4:30 और 3 का हो जाएगा 5:30। चलिए ठीक है, हम 1 ही घंटा ले लेंगे फिर 2 से 3 के लिए। बोलिए, आई थिंक एवरीवन शुड बी हैप्पी विद दिस। खाना वाना भी हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर हैप्पी विद दिस? ठीक है सर। ये इंडियन टाइम नहीं, आपका ही टाइम है ना? कैसे ही है ना? हाँ केस है हाँ। कैसे है ना? हाँ कैसे है, ठीक है। कुछ लोग एड्रियल एंड समायरा आर नॉट हैप्पी। एड्रियल का तो क्लास है शायद उस टाइम ना, एड्रियल? Yes, I have 2:30 to 5 maths. 2:30 to 5 मार्क्स। अच्छा आई थिंक, चलिए ठीक है, तो हटाइए ये सारी चीजें।
4 to 6 ही करते हैं, ठीक है, हाँ सर ये सही है। 4 to 6 ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, चलिए 4 to 6 ही रखते हैं, ठीक है। एड्रिल आप क्या कीजिएगा? Sir, I watched the recording. हाँ लेकिन लास्ट टाइम ना रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, पता है आपको। लेकिन वो तो खैर कि दूसरा मतलब लाइक दूसरे बैच में हमने सेम चीज पढ़ाई हुई थी, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच अगेन दिस विल आल्सो बी देयर, किसी ना किसी बैच का आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 to 6 के से फ्राइडे, ठीक है, प्लीज राइट नोट। एक्स्ट्रा क्लास वंस मोर 4 to 6 PM के से ऑन फ्राइडे, प्लीज इसको लिख लीजिए आप लोग नोटबुक में। फ्राइडे कब पड़ रहा है, कब है होली? 30 तारीख, 30th सितंबर। कौन सा साल चल रहा है? 2022। चलिए, thank you guys, thank you very much, we'll meet on Friday, we'll solve some more problems on equilibrium constant, okay, चलिए, bye guys, thank you, take care। Thank you, sir. थैंक यू सर। Allah Hafiz. Yes, sir.